Got it. टेक्निकल टीम, अरे मैं भी आ रहा हूँ बीच में, तो 2 मिनट। Hello, doctor. हेलो, वीडियो चालू कर देना। मैं भी दिखूंगा मैं नहीं। Hello, doctor. यस, Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। उनको थोड़ी पता है। हाँ, म्यूट क्यों कर रहा है? Yes, sir. Please, sir, try to share your screen for a trial purpose. हाँ ठीक है, तो रुको, यहाँ पे पावर पॉइंट एडवांस में जाके, हाँ पावर पॉइंट में जाके, हाँ, हो गया। ठीक है। इज इट विजिबल फॉर यू टू मतलब इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? हेलो। Yes, ma'am. Yeah. ओके ओके, ये फॉरवर्ड आगे पीछे कहाँ से होगा? यहाँ से ये देख रहे हो? हाँ, ये so we'll share the screen when needed. Can we just switch it off for the time being? Okay, ma'am. Okay. Yeah, okay. Stop sharing करना है यहाँ से। हाँ, वापस बता रहा हूँ, स्क्रीन शेयर, बेसिक एडवांस में जाके इसके शेयर बस करके यहाँ से
गिफ्ट। तो रहेगा, अब ये चलेगा। हाँ पहले बंद तो करो, अभी जरूरत नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं हुआ हाँ है। अनम्यूट कर रहा हूँ। Sir, am I? तो हेलो, Hi, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर, Sir, Ravi this side, sir. वेलकम सर। So, sir, other doctors are just joining. And यस as per your request, I requested Dr. Anurag, sir, also. So, he will Yes. also join. यस Yeah. So, sir, have you joined from the laptop? यस, Okay, sir. So, sir, please share the slides as shared to you. And by 8 p.m., we will start. Is it okay, sir? हाँ कर देंगे, शेयर कर देंगे। Okay, sir. वो नहीं करना है, अरे the ask to share the slide पापा, होगा। अभी नहीं करना। तो दो शक्ल कैसे दिखेगी सबकी? दिखेगी। दिखेगी? हाँ। Is the slide visible to you? Sir, slides are visible, sir. Okay. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सवाल ठीक है, आएंगे। ठीक है। ये क्या ऊपर? ये मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा अब है। स्लाइड और किससे होगी? इससे? ये इसी से? mouse है, हाँ। ठीक है। जबरदस्त हो रहा है। जब तक अपना वीडियो ऑन करते हो, प्राइवेसी कंसर्न्स, ऐसे इट्स वेरी
Hello, Ravi sir. Hello. Hello. Hello, Ravi sir. Hello. Yes, please. Yes, sir. We are good to go. We are live. Yeah. Thanks. Good evening, Raj boss. Good evening. स्वर्णकार जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। सब बढ़िया है। लोगों से आजकल पढ़ाई हो नहीं रहे यार। लोगों से पढ़ाई होती नहीं है अब। भूल गए होंगे ये लोग, ऐसा ही नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। मालवीय तो बेचारे फोन कर करके आने तो सभी आ जाए। मैं भी थोड़ा जिम वाले रूम में था यार। मैं वन करवाता हूँ, देखो लोगों को। आ रहा हूँ नीचे पे। कहाँ जा रहे हो? Sir, we can start. कौन है सर? Yes, sir. We can start, sir. राज बॉस. हाँ, कर दो, शुरू कर दो। दो मिनट वेट करना. कम्युनिटी वगैरह आ जाओ. ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। सर. हाँ भरत भाई, क्या हाल है? हाँ. राजू आ गया.
जी सर बॉस पधारो। दो मिनट बॉस, कमलेश बॉस ज्वाइन कर लें, आ रहे हैं फिर चालू करते हैं। हाँ हाँ सोनकर बॉस प्रणाम। हाँ हाँ सर, अभी देवेंद्र, लावटी बॉस, परेश और कपिल ये भी ज्वाइन कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। राजू भाई को नमस्कार। प्रणाम भरत भाई। नमस्कार बॉस, नमस्कार। भरत सर क्या हाल है? हाँ, ठीक मानते। लैपटॉप भी उधार लाना पड़ता है। राज बॉस अंधेरे में क्यों बैठे हो यार? लाइट जलाओ ना, शक्ल तो दिखे यार। हेलो सर एक बार आप लाइट्स अनशेयर कर देंगे ना तो देन विजिबल हो जाएगा। हाँ सर, सॉरी पार्डन। आप स्लाइड्स अनशेयर कर देंगे ना सर वापस यहाँ से, तो एक बार सबके हाँ फेसेस विजिबल हो जाएंगे। अच्छा, ना दिख रहे हैं वैसे। Sir, around 7 doctors have joined, so we can start. Or if you want to wait, then we can wait also. आप सर किस नाम से हैं सर? कहाँ हो सर? हाँ, तो कोई स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा सर? हाँ, उसमें 7 लोग ही है अंदर, उसमें आपका नहीं आ रहा सर। दूसरा दूसरा लिंक मैंने एक और भेजा, एक और भेजा सर उसमें। हाँ सर, अनुराग सर ट्राई कर रहे हैं। पैग ही गर्म हो जाएगा वो। राज बॉस चालू कर रहे हैं? चालू कर दो भले, आते रहेंगे लोग। कर रहे हैं?
हाँ सर चालू कर दे मैं? कर दीजिए। Yes, sir. We can. Hello. Yes, sir. We can start. Yes, yes. Good evening to all. Welcome to today's webinar. Here we will have a brief discussion on vitamin D for pediatrics. We will have a focus on current status of vitamin D deficiency in the Indian scenario, why vitamin D supplementation is needed in pediatric population, and available evidences in its favor. Let us start with the introduction of vitamin D deficiency and its current status. As we all know, vitamin D is a group of fat-soluble prohormones that exist in two major forms, ergocalciferol and cholecalciferol. It is essential for many important functions in our body. In intestine, it increases the absorption of calcium and phosphorus. In kidney, vitamin D required for the absorption of calcium in distal tubules. It enhances the bone mineralization and maintains the equilibrium of ionized calcium between intracellular and extracellular areas. It is again essential for TSH secretion. Various studies have shown that there may be a significant association between vitamin D deficiency and hypothyroidism. Pardon? Vitamin D receptors are located on the activated T cells, activated B cells, macrophages, and monocytes, and plays a role as immunomodulator. Vitamin D receptors are located on the beta cells of the pancreas. So in situations in which body requires increased amount of insulin, vitamin D plays a role in the secretion of insulin. Vitamin D receptors are located on the vascular smooth muscle, endothelium, and cardiomyocytes. Adequate vitamin D levels are associated with reduced risk of cardiovascular disease. It also plays a role in cellular differentiation. So it decreases the cell proliferation and helps in their maturation. Therefore, vitamin D has a protective role in various cancers. For the purpose of cutoff point for vitamin D deficiency in general vitamin D deficiency is considered when serum levels of 25 hydroxy vitamin D levels are less than 20 nanomicrogram per milliliter. Vitamin D deficiency has emerged as a significant public health problem throughout the world. Vitamin D deficiency is considered to be the most common nutritional deficiency and also one of the most common undiagnosed medical conditions in the world. The prevalence of vitamin D deficiency is 50 to 90% in Indian subcontinent and attributed to low dietary vitamin D along with dark color of the skin and changing lifestyle. So newborns and small infants, they are at increased risk if mother is deficient in vitamin D due to any cause. Prolonged exclusive breastfeeding without supplementation is again a cause of vitamin D deficiency in infants and newborns because the breast milk contains only very small amount of vitamin D, that is in the range of 12 to 60 international units per liter of breast milk, and almost same amount is present in cow's milk. So milk is not a good source of vitamin D. However, it is a good source of calcium. Preterms and small for gestational age babies are relatively deficient due to the higher needs. In older infants and children, low vitamin
D level is attributed to low dietary calcium and vitamin D, along with the dark skin color and changing lifestyle. The major source of vitamin D is sunlight exposure between 10 in the morning to 3 p.m. So inadequate exposure to sunlight causes its deficiency. Most of the Indian children are homebound, playing indoor games, and there are inadequate places to get sunlight, particularly in the metro cities. This is further increased by their dressing behavior, use of sunscreens, and low dietary intake of vitamin D. Children with dark skin are at higher risk as melanin reduces the vitamin D synthesis in the skin. There are various factors which affect the quality of sunlight. That includes altitude, latitude, winter season, time of the day, cloud amount, pollutions, and aerosols. Certain pathological conditions that causes vitamin D deficiency are cystic fibrosis, pancreatic insufficiency, malabsorption, chronic kidney and liver diseases, small bowel syndrome, celiac disease, and many more. And certain drugs that can cause vitamin D deficiency that includes isoniazid, rifampicin, phenytoin, phenobarbital, and steroids. Vitamin D adequacy leads to less oxidative stress and improves mitochondrial and endocrinal functions. Adequate vitamin D levels reduces the risk of autoimmune disorders, infections, metabolic derangements, and impairment of DNA repair. As vitamin D deficiency highly prevalent in pediatric age group, its use in the screening of cardiometabolic risk factor is recommended. The effects of vitamin D deficiency in general, most cases of vitamin D deficiency are subclinical. Rickets and osteomalacia are the results of extreme deficiency. Vitamin D deficiency almost adversely affects almost every system of the body. It suppresses the immune system and chances of acquiring infections are significantly increased. Vitamin D related systemic disorders include the autoimmune disorders. They are rheumatoid arthritis, irritable bowel syndrome, type 1 diabetes, systemic lupus erythematosus, and psoriasis. The cardiovascular disorders related with vitamin D deficiency include hypertension, coronary artery disease, cardiomegaly, and congestive cardiac failure. The endocrinal disorders includes various metabolic syndromes and type 1 and type 2 diabetes. The hemopoietic system includes the disorders are anemia, leukemia, infections, asthma, tuberculosis, recurrent respiratory tract infections. The musculoskeletal disorders which are related to hypovitaminosis D includes rickets, osteomalacia, osteoporosis, and myopathies, and few malignancies which are related to hypovitaminosis D includes carcinoma of the breast, carcinoma colon, carcinoma of pancreas, ovarian cancer, and prostatic cancer. Why vitamin D supplementation is needed in pediatric population? 95% of vitamin D requirement is fulfilled by the sunlight. In our scenario, many factors like dressing styles, duration of sun exposure, skin color, pollution, clouds, and many other factors reduces the effectiveness of ultraviolet B rays, and enough vitamin D cannot be synthesized in the skin. Normal routine Indian diet doesn't contain enough amount of vitamin D. Several studies have shown significant lower levels of vitamin D in asymptomatic pediatric population worldwide. Therefore, vitamin D supplementation is important in infants and children. Center for Disease Control and Prevention, WHO, American Academy of Pediatrics, and even Indian Academy of Pediatrics recommends the use of vitamin D as prophylaxis. All children need vitamin D beginning shortly after birth. Children younger than 1 year of age should receive 400 international units of vitamin D
per day, and children between 1 to 2 years of age should receive 600 international units per day. So all infants should receive vitamin D for improving bone health and preventing rickets, starting shortly after birth, regardless of the mode of feeding. A daily dose of 400 international units of vitamin D in infants has shown to be effective for preventing rickets. Vitamin D is well tolerated and not associated with toxicity, and universal vitamin D supplementation until 12 months of age is strongly recommended. Beyond 12 months of age, vitamin D supplementation is recommended only in the group of children at risk. So the clinical evidences which favors the supplementation of vitamin D. Here is a study. In this study, 300 children were given vitamin D. Out of these 300, none of them developed rickets and none have the radiological evidence of rickets. While in the control group, 372 children who were not given vitamin D, 14 developed rickets. The study concluded that vitamin D supplementation is must for the prevention of rickets in the infants. Again, this is in this Wingenberg's 2010 Cochrane study. The children from 1 month to 20 years were given vitamin D supplementation and studied for total body bone mineral density. With a follow-up of up to 2 years, it was found that vitamin D has no effect on total bone mineral density. The result do not support vitamin D supplementation to improve bone density in healthy children with normal vitamin D levels, but suggest that supplementation of deficient children may be clinically useful. Further RCTs in deficient children are needed to confirm this. Here is a double-blind, randomized controlled trial study which included 93 children of pneumonia with low levels of vitamin D, and these children were given 1 lakh international units of vitamin D by single dose of intramuscular injection. Control group consisted of 98 same patients who were not given vitamin D. Trial group had the mortality of 11.8% in comparison to 38.7% in control group. In pneumonic children with high vitamin D deficiency, supplementation with single injection of 1 lakh international unit of vitamin D significantly lowered the mortality risk, and pediatric sequential organ failure assessment has reduced. Again, this reduced the time to recovery and improved the ratio of PaO2 and FiO2. This is a retrospective observational study. It included 94 children suffering from allergic diseases on inhalation corticosteroids with vitamin D deficiency. They were given vitamin D supplementation for 6 to 9 weeks. After supplementation, there was a significant rise in serum level of vitamin D3. Thus, the study concluded that vitamin D deficiency in children with allergic diseases can be treated with maximum recommended dosage of vitamin D for the shot, especially if they are on steroids. This is a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trial that included 12 studies. It concluded that vitamin D supplementation significantly reduces the risk of asthma exacerbations. This is a randomized, double-blinded, controlled clinical trial that included 120 children with inflammatory bowel disease and hypovitaminosis D. They were given vitamin D in the dose of 2,000 international units per day for 6 months. Vitamin D supplementation
significantly decreased inflammatory bowel disease activity score, quality of life, and inflammatory markers. In this study by Jolaif et al., group of children who received vitamin D was compared to placebo group, and they found that vitamin D supplementation overall reduces the risk of acute respiratory infection compared to pulmonary group. In this study, 112 preterm infants were given 800 international units of vitamin D per day, started within 48 hours of birth for 28 days. The occurrence of bronchopulmonary dysplasia was decreased, lower levels of vitamin D was significantly decreased, and serum inflammatory markers were significantly reduced. And the last one is, this is a recent study, vitamin D proved to interact both with the innate immune system and adaptive immune system. Vitamin D supplementation might play a role in the prevention of SARS coronavirus 2 infection disease in pediatric population. So the key message of this presentation is that vitamin D is a global public health problem with high prevalence in children and adolescents. Vitamin D deficiency has negative implications, poor bone health, increased mortality, allergic disease, and other infections. All infants should receive vitamin D for improving bone health and preventing rickets. Starting shortly after birth, regardless of the mode of feeding, vitamin D supplementation is associated with the lower mortality, reduced inflammatory asthma exacerbations, and reduced risk of bronchopulmonary dysplasia. Thank you. क्या बात है मालवी. Your presentation is beautiful and more informative. Very you, nice sir. presentation, Rajesh. Thank you, sir. Thank you. अनुराग सर आगे खमा नहीं हुकम. अरे मैंने पूरा सुना है तेरा. देख मेरे पीछे कितनी वादियां, खूबसूरत वादियों में बैठा हूँ. यहाँ पे स्विमिंग पूल है, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है पीछे. तो सर तकलीफ ये है कि आप हमको छोड़ के चले गए. तुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तू दिल में है. तू दिल में है, तुझे छोड़ के नहीं जा सकते. मैंने उदयपुर से पूरा अटेंड किया, मैंने सारा सुना तेरा, सारा क्या डेफिशिएंसी स्टेट्स हैं, क्या डोजेजेस हैं, जो तूने स्टडीज बताई सब सुनी मैंने पूरी. वेरी वेल स्पोकन राजेश, मजा आ गया. थैंक यू सर, थैंक यू. इट मैटर्स फॉर मी. आपका आशीर्वाद सर. नहीं बढ़िया. और वाकई नीड भी है इस चीज की. वी ऑल नो. यस सर, यस. रियली रिक्वायर्ड. वेलकम सर. बट वेरी नाइस. तेरा पहले मैंने लिंक ज्वाइन किया तो उससे हो नहीं रहा था. तुमने कहा वीडियो नहीं आ रहा. मैंने ये प्रॉब्लम सर इसी से आई है, लिंक से. इन्होंने 2 लिंक दिए थे. हाँ, 2 लिंक. फर्स्ट लिंक जो ईमेल वाला था, मुझे लग रहा है वो लिंक काम नहीं कर रहा है, इसलिए ज्यादा लोग आ नहीं पाए. हाँ, वो स्पीकर्स के लिए होगा. वो शायद फैकल्टी का स्पीकर का. हाँ, स्पीकर्स के लिए सर. तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई कि ज्यादा लोग आ नहीं पाए. बहुत बढ़िया लग रहा है. चलो, ग्रेट राजेश, नाइस सीइंग यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके, बाय बाय. हाँ राजेश. हाँ सर. हाँ, मैं थोड़े से 2-3 चीजें और जानना चाह रहा था. हुकम सर. जो अपने सबके इंटरेस्ट के लिए होगी. एक तो इस पे ये पूछना चाहता कि विटामिन डी का जो इंडिविजुअल रोल है एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी भी, क्योंकि इसमें कई इंफ्लेमेटरी मार्कर्स को ये रिड्यूस करता है. तो हैव एनी स्टडी विद सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ विटामिन D3 विद विटामिन A, D, E, K एंड फ्लेवोनॉइड्स एंड कैरोटीन? सर ये जो स्टडीज जो हुई है, ये कंपैरिजन किया है इंफ्लेमेटरी मार्कर्स को कि प्लेसिबो ग्रुप में और उन लोगों से जो ऑलरेडी हाइपोविटामिन डी से सफरिंग करते हैं. ओके. उनसे कंपेयर किया हुआ है. उसको एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी थेरेप्यूटिक रूप में इसको कंपेयर नहीं किया हुआ है. ओके. क्योंकि ये जितने विटामिन रिकेट्स में जब अपन देते हैं तो रिकेट्स में एज ए ये मतलब वैसे तो कैल्शियम डिपोजिशन और उसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए द बेस्ट वन साथ में, लेकिन इट इज पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी भी है. बेसिकली सर अगर हम रिकेट्स की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास हमारे फॉलोअप का कोई बच्चा आता है रिकेट्स
Rickets is the manifestation of extreme and prolonged deficiency of vitamin D. इसका मतलब हम मिस कर गए, बहुत कुछ मिस कर गए. So the important thing is the prevention of vitamin D deficiency with timely supplementation. With timely supplementation. Even एक नई चीज 21st एडिशन में नेल्सन साहब ने लिखा है पेज 377 पे कि बच्चे आते हैं हमारे पास, दांत नहीं आए, बहुत अच्छा कटअप पॉइंट दिया है. Once the central incisors do not erupt by the 10 month of age or molars do not erupt by the 18 months of age, this is a sign of rickets. This is a sign of rickets. A sign of ricket means extreme vitamin D deficiency. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैबुलस, मस्त, बिल्कुल, यू आर राइट सर. बहुत 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 ही बढ़िया, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू गिवन द गुड इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू सर. बंद करें सर. गुड नाइट. हाँ बस, गुड नाइट. गुड नाइट. ऐसे 2 लिंक होने से दिक्कत रह रही है शायद, है ना, कि कई लोग पाली से जुड़ नहीं पाए इस वजह से. हेलो. हेलो. हाँ सर. सर 2 लिंक सर होने मालवीय सर जा चुका सर. मालवीय सर ने लेफ्ट कर लिया सर, लीव कर दिया सर. हाँ नहीं, जैसे देवेंद्र लाहौटी और पाली वाले इसी वजह से सारे रह गए जुड़ने से. बिल्कुल सर. हाँ, एक्चुअली में ये लिंक पहले मुझे मिला था, तो मैंने ये पॉइंटेड आउट किया, राजेश को फोन किया, मैंने कहा राजेश भाई यार ये लिंक का ना, ये एक्चुअली बेसिकली लिंक जो है स्पीकर्स के लिए है, ये किसी को नहीं लगेगा. तो मैं जस्ट एक दूसरा लिंक भेजो सबको बना के, क्योंकि जूम मीटिंग्स में बहुत लेता रहता था पहले भी और अभी भी लेता रहता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि ये जो स्पीकर्स के लिए अगर वो स्पीकर का जो भी ईमेल एड्रेस भरना पड़ेगा तो ही होगा, वो थोड़ी प्रॉब्लम है उसमें, पर हो गया, चलो कोई बात नहीं. पर बहुत बढ़िया भैया. और चलो इस बार आप सबसे मिलना हो गया यार, सबसे बड़ी बात कि आप सबसे मिलना हो गया. सत्यनारायण जी, स्वर्णकार जी, मीना जी, राजेंद्र जी, क्या बात है. सब प्रतीक तो गायब हो गया अभी. सर पति आ गया सर, पति दिख रहा है सर. हाँ, उसके कोई आ गई होगी. ओके सर. चलो देन, ओके, गुड नाइट सर. ओके सर. गुड नाइट. गुड नाइट सर.
Hi sir, Ravi this side.
Technical team, we can wind up the meeting, please. Anyone from the technical team, please? Anyone from the technical team? We can wind up the meeting, please. Hello, anyone from the technical team? Can we wind up the meeting, please?